स्वागत है तुम्हारा। आज खुलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे ज्ञान का ढोलक। मैं हूँ अमित मोदक। ये स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत सबको का, दिल से बहुत बहुत स्वागत। सो ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्ञान का ढोलक, और ज्ञान किस बात की? मैथमेटिकल ज्ञान। सो मैथमेटिक्स में क्या ज्ञान लेंगे आज हम लोग, वो है फ्रैक्शंस। यस, और ये हमारा ग्रेड 5 के मैथमेटिक्स के फ्रैक्शंस चैप्टर्स को समझेंगे, और ये हमारा पहला आईएमओ सीरीज के लेक्चर 1 है। ऐसे में हर वीक में नए नए हर एक क्लासेस के लिए 5 से लेके ग्रेड 8 तक I will bring fantastic videos, and from those videos you are going to get a lot of benefits that will be comprising of very important questions. It will be comprising of very good concepts, quizzes, and many more. So what we understand by fractions? And very very important, one more thing: if you have not subscribed the channel, do it right now, because I don't want you miss the videos, you miss the notifications. So also press the bell icon, and you are going to get lot of benefits from these videos. Yeah. So as I said, what is fraction? So introduction part, then types of fractions and related problems. So let us first understand the introductory part. What a fraction is, why it is being required. Now, every time we have been talking whole numbers, integers. So 5 chocolates, 5 banana, 5 mangoes, 7 pencils. These are whole. When we talk about whole, it's complete. But did it ever happen with you that you took 2 chapatis and your mama made the sabji very tasty, so you thought of taking half of the chapati, because with the 2 chapati it was fully loaded with you got fully loaded with 2 chapatis, but still, as the sabji was very very tasty, so you thought of taking half of the another chapati also, so that you felt more satisfying. Or sometimes you went to have pizza in the market with your parents, with your cousins. Did you had the whole pizza? Might be some students might have the whole pizza alone, but most of the cases what we take is we share some part of it. So how we can understand, how we can represent when we take we take a part of the whole. So we say a fraction is a part of whole or a collection. A fraction is a part of a whole or a collection. And a fraction can be represented as number of equal parts considered by total number of equal parts. So let's say suppose I am having a sheet of paper. Okay. Now this is whole. Whole. It's not HOLE. It's WHOLE. It's a whole. Now let's say I am requiring only half of it. So what I will do is I will just fold it. I require only half of it. So what I can say, if I use this part, let's say I have made some lines this side. Okay, so I'm using only half of it. So although it was complete, but I require only this part.
So how I will represent? On folding, what I found is I have divided into two equal parts. Okay. Now out of that, how many part I am using? I am using one part. So how I can represent it? I can say that out of out of two parts, I am using one part. Number of equal. Now both are equal. Okay. Now how much part I am considering? One part out of two parts. Similarly, if I take it, let's say I am folding once more. Okay. Now on folding, you can see one part, two part, three part, four part. Okay. One part, two part, three, four. Four equal parts on folding. Okay. On folding like this, we are getting four equal parts. Now, if I say, tell me out of this complete, that means the four parts, how much part is being shaded with these lines? You will say, sir, its total number of equal parts is 4. Out of that, 2 part is being shaded. If I increase it to 1 part more, now if I say, tell me now how many parts are being shaded, you will simply say, sir, 4 parts were there and 3 parts were shaded. So this is what we say, or this is what how we express in a fraction. We take all the whole numbers here. Okay. Now in this, the upper number, this one is called as numerator, and this one is called as denominator. Now in the denominator part, we never take 0. Okay. In a fraction, we do not take denominator being 0, because we cannot say that 0 part and we take some part of it. So we generally we do not take any 0 on the denominator part. Okay. So let's move on and now understand fractions on a number line. Now we have been learning the number lines, like if we take, let's say a line is being there and we represent with a, like we starts with, let's say 0 on this side, on the center, let's say 1, 2, 3, 4. We can take the negative numbers. So this is the representation of integers. Similarly, we can, because integers comprises of the positive numbers as well as negative numbers including 0. Similarly, the natural numbers are being represented by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. But what? How to represent? How to represent a fraction? How to represent a fraction on number line? Okay, let us understand this part. So let's say suppose, for example, I am taking 3 by 4. Okay, so what I will do is, first of all, I will make a line. I will make a line. Okay. Now, what I can see here is 3 by 4. Okay, 3 by 4. So, the numerator is less. The numerator is less. If in case we have a numerator less than denominator. Okay, numerator
less than denominator, in that case, the fractions are being represented in between 0 and 1. The fractions are being represented in between 0 and 1. So let's say this is our 0. Okay, this is 1. Now 3 by 4 means out of 4 we have to represent 3 parts of it, right? So as per the denominator, we will divide 0 and 1 into 4 equal parts. Okay. So for making it 4 equal parts, what we can do is we can make 3 lines, 1, 2, 3 and 4. So this is our first 1 by 4, because out of the 4 parts, this is 1 by 4. This is going to be the 2 by 4, and this is going to be 3 by 4, and this is what our point is on the number line. Let's say if I am talking about 5 by 7, what I can take? First of all, what I will make is number line. So yes, this is our number line. Everything will be very, very clear, students. So this is our number line. Then we will represent the numbers, that is, as we can see, numerator being smaller than denominator. So it will be lying between 0 and 1. So 7 parts, that means we have to make 6 lines. So let's say I am making 1, 2, and these should be equal spaced, 3, 4, 5 and 6. So I have made 6 lines which got divided into 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It got divided into 7 parts. Now out of that we have to see 5 by 7. So how we can see which one is the 5 by 7? So if you go on 0, then 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, and yes, we got this point to be 5 by 7. So students, I want you to practice 3 by, let's say, 10, 2 by 5, and one more I am giving, 5 by 3. Here what you will try to do it to understand, to represent 5 by 3, that is the numerator is being greater than the denominator. So you try this in your notebooks. Okay, chalo, moving on to different types of fraction. Now what are the different type of fractions? First is like fractions. Like fractions means the fractions having same denominator. Fractions having same denominator. That means suppose let's say 7 by 11, 2 by 11. Both the fraction is having 11 as a denominator. So that is like fraction. Or we can say 1 by 7, 5 by 7. These are like fractions. So the fractions having same denominators are called as like fractions. Then obvious the opposite one is unlike fractions. Fractions having different denominators. For example, 3 by 19, 2 by 19, 1 by 7. These are unlike fractions.
Next comes proper fractions. Now, just little bit before only we were discussing that the fractions are represented by a by b form, or we can say a numerator with a denominator, and we were talking about the numerator less than denominator. So if a fraction is having the numerator less than denominator, then these fractions are said to be as proper fractions. Getting my point, students? So these fractions are said to be as proper fractions. For example, 5 by 6, 1 by 11, 2 by 9. These all are proper fraction. Why? We can see 5 is being smaller than 6, 1 is being smaller than 11, 2 is being smaller than 9. Alright. So, do we have the numerator being greater? Yes, definitely. And that fractions are said to be as your improper fractions. So, fractions having numerator either equal or being greater than the denominator are said to be as improper fractions. For example, 15 by 7. 15 is being greater than 7. 19 is being greater than 14. 10 is being greater than 9. So, very important takeaway point is, remember that all the value of all proper fraction is less than 1. And that's what I said, that whenever it's a proper fraction, we will represent that fractions on the number line between 0 and 1. Between 0 and 1. And the value of all improper fraction will be either equal to or more than 1. And one another type of fraction we have, that is mixed fraction. Mixed fraction. Now what is this mixed fraction? This fraction basically consists of a whole part and a proper fraction. Whole and a proper. And these mixed fractions are being formed only by improper fractions. Only by improper fractions. Okay. Now, how we are showing the whole number and a proper fraction here? If you look into this part, this 1 you can see as a whole, and this 3 by 9 is your proper. Similarly, 3 is as a whole, 8 by 11 as a proper. 6 is as a whole, 1 by 9 as a proper. So, on the chat box, please write one example. What you can say? Write on the chat box. One mixed fraction example. 2 1 by 5. Yes, it can be. 3 1 by 7. Yes, it can be. If says 3 9 by 8, 7. No. Why no? Because 3 is whole. That is okay. But 9 by 7 is improper. We cannot write improper there. We need to write a proper and a whole that comprise of your mixed fraction. Great. So let's move on now to next topic, that's our unit fraction. That is unit fractions. So fractions having 1 as a numerator. If the fractions are having 1 as a numerator, then it is said to be as unit fractions. Let's say 1 by 4, 1 by 6, 1 by 9, all are having numerator as 1. Okay, so let's do a quick recap. What we have understood till here. Let's understand, students. Write on the chat box what are the different fractions we learned. Chalo, chalo, quick, be quick. Write on the chat box what are the fractions we have learned. Yes,
like fractions, unlike fraction, proper fraction, improper fraction. All the things will be clear, huh? Every fraction question you will be easily in the just fingertips, huh? Mixed fraction. Yes, so let's have the examples as we have understood the concept. Now, like fraction means the denominator of the fraction should be same. For example, 11 by 15, 13 by 15, 5 by 15. All these are what? The like fractions. Unlike fractions, if the denominators are different. Let's say 11 by 13, 7 by 9, 6 by 17. These are unlike fractions. Next comes proper fraction. Proper fraction means the numerator should be lesser than the denominator. Like 2 by 7, 3 by 11, 4 by 9. What is the thing what we find here in proper fraction is the numerator is less than the denominator. What about improper fraction? Just we can make the reverse of it. 7 by 2, है ना? 11 by 3, 9 by 4, 7 by 3, 25 by 11. What we are finding here? The denominator is smaller and the numerator are bigger. And what about the mixed fractions? Here we represent with a whole and a proper. So जैसे लिख सकते हैं 1 1 by 2, 3 4 by 7, 6 3 by 8. We can take the examples here that 1 is whole, 3 is whole, 6 is whole and 1 by 2, 4 by 7, 3 by 8. ये सारे क्या है? Proper fractions. Okay. And last, unit fraction. Unit fraction. Unit fraction was all the fractions having numerator being the same, that is 1. Okay, so these were the examples and we have understood all these fractions, the different types of fractions very clear. So write on the chat box अगर सारे fractions clear हो गए तो जल्दी से chat box में लिखो पक्का पक्का means 100% understood. पक्का पक्का जल्दी से लिखो. Alright, चलो आगे बढ़ते हैं. Now comes conversion of unlike fractions into like fractions. और फिर देखेंगे दूसरा conversion of mixed fraction into improper fraction. Yeah, vice versa. So let us first understand conversion of unlike fractions into like fractions. Unlike means the denominators are different और उनको क्या करना है हमें like में बदलना है. Okay, चलो. So converting unlike to like मतलब डिसिप्लिन नहीं है ना, इनडिसिप्लिन है, उनको डिसिप्लिन में लाएंगे. चलो, so let us see. Let's say example I am taking 1 by 5, 1 by let's say 3 and 1 by 2, or suppose let's say I am giving it as a 7 by 2. Okay, अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि यूनिट फ्रैक्शंस ही लेना है, it's not necessary. So suppose 1 by 5, 1 by 3, 7 by 2. What we find is, we are finding the denominators being different. 5, 3, 2. What we need to do is, we need to convert them into like fractions. That means we need to make the denominator same for all. How we can do that? So first of all, the first step is to take LCM. LCM, okay, as LCM stands for the lowest common multiple. It should be the multiple
we should get a number which should be multiple of 5, 3 as well as 2. So that's why we are finding LCM of 5, 3 and 2. So as we all know, 5, 3 and 2 being the what? Being the co-prime, that means their HCF is 1. So we simply multiply. 5 3s are 15, 2s are 30. So 30 being the LCM. Now what we can do is we have 1 by 5. Now in order to make it denominator 30, what I have to do is I have to multiply 6. 5 6 are 30. So let's do the same with the numerator. So we get a 6 by 30. Similarly, 1 by 3, we should multiply something to bring it into denominator 30. So we'll simply multiply 10. 10 3 tens are 30. So we'll multiply with the numerator also. It becomes 10 by 30. And the same goes with 7 by 2. 2 into 15 we know 30. So 7 into 15 also. So 7 5s are 35, carry 3, 7 and 3, 10, 105. So now what we have got? 6 by 30, 10 by 30 and 105 by 30. Now they have become a like fractions. Why? Because we can find the denominators to be equal. We can find the denominators to be equal here. Okay. Now, the second is, let's understand converting mixed fraction into improper fraction. Improper fraction. Okay. So, for that, what we have to understand is, see, denominator into whole number part plus numerator divided by denominator. So this is how your mixed fraction gets into improper. नहीं समझ आया? कोई नहीं. See, very simple it is. Suppose let's say we have a 1 by 5. Okay. So what we have to do is we have to simply what we have to do is we have to multiply these two parts. We have to multiply these two parts, and then whatever the result is, you add with the numerator part. Okay, and keep the denominator same as it is. So what I said, फिर से दोहराते, we have to multiply the denominator with the whole part. That means I will do 1 into 5, then plus, it is plus what? The numerator 1 divided by the whole denominator, what? Divided by the denominator, what it is given? 5. So it becomes 1 5s are 5 plus 1, 6. 6 by 5. Okay, let's take another example. Let's say 3 5 by 7. So what we'll do? 7 3s are 21 plus 5 by 7. So once you practice, it will become in your habit and it becomes very easy. Okay, simply you can do 7 3 is 21 plus 5, 26 by 7. If I say 3 1 by 2, very simple, 3 2s are 6 plus 1, 7 by 2. So once you practice, it will come into your habit. Okay, once you practice, it will come into your habit and you can do it just seconds. Alright students? Okay. So now we have understood about how to convert the mixed number into improper fractions. Obvious, there will be a reverse also. There will be a vice versa of it. Then conversion of improper fractions into mixed fraction. How will do that? So for that, again, very simple. Let's say, suppose we have 15 by 7. Okay, 15 by 7 is being given and we need to convert this
improper fraction into mixed, what you will do is simply you divide it. Simply you divide it 15 by 7. 7 twos are 14. What is remainder is 1. So what you will do is, what denominator is there? 7. So keep the denominator as it is. Now, as we all know, this is our divisor. This is divisor. Okay. This is our quotient. This is called as remainder. ओके व्हाट वी डू इज क्या करेंगे सिंपली देखो क्या करना है 7 के साथ कौन मल्टीप्लाई किया 7 टू जा किए ना तभी तो 14 है सो सिंपली क्या करना है यहाँ 2 बैठा देना है और रिमाइंडर को ऊपर चिपका देने का ओके सो देखो 7 टू जा 40 प्लस 1 15 15 बाय 7 हो गया ना बहुत इजी है तो देखो कोई दूसरा नंबर लेते हैं सॉरी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं 41 बाय 9 ले लेते हैं चलेगा दौड़ेगा एकदम सो 41 डिवाइडेड बाय 9 बताओ भाई 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 सर होल्ड ऑन 9 5 जा ज्यादा हो जा रहा है 9 4 जा लेते हैं 36 41 माइनस 36 करेंगे कितना आएगा 5 क्या लिखूं बताओ बताओ जल्दी जल्दी डिनोमिनेटर में क्या आएगा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो यस 9 आएगा होल पार्ट में कौन सा आ जाएगा 4 यस और ऊपर चला जाएगा 5 9 4 जा 36 प्लस 5 40 सीधा आंसर ओके तो इस तरह से हम लोग करेंगे फटाफट क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड में क्या प्रॉपर फ्रैक्शंस को कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे क्यों देखें क्या मान लेते हैं 1 बाय 7 है बताओ 1 को हम लोग कैसे डिवाइड करें 7 से है ना सो यहां हम लोग नहीं करते ठीक है वी ऑलवेज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर ठीक है चलो दूसरा आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ओके ये भी एक इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट इक्वी इक्वी का मतलब क्या होता है इक्वल इक्वल सो क्या कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस two or more fractions having the same value of representing the same part of a whole सेम चीज को दो डिफरेंट फ्रैक्शंस में अगर दिखा पाते हैं two or more fractions having the same value of representing the same part of a whole are called equivalent fraction अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई दो ठीक है दो सपोज दो पार्ट्स है टोटल पार्ट्स दो है उसमें से मैं बोला कि एक पार्ट में कोई भी फूड आइटम है सपोज लेट्स से ठीक है तो एक रोटी को दो भागों में डिवाइड किया गया लेट्स से ठीक है एक चपाती है उसको दो भागों में डिवाइड किया तो टू पार्ट्स का मैं बोलूं कि एक पार्ट मैंने खा लिया ओके एक रोटी है उसका दो टुकड़ों में दो हिस्सों में डिवाइड किया उसको और उसमें से मैं बोला कि एक हिस्सा मैं खा गया तो कितना हिस्सा में खाया 1 आउट ऑफ 2 सो 1/2 अगर कोई सपोज मेरा कोई फ्रेंड है उसने भी एक रोटी का मैं बोलूं कि भाई 4 टुकड़ा किया गया एक रोटी का 4 टुकड़ा किया गया ठीक है और मैं बोलूं कि भाई उसने भी उन 4 टुकड़ा का 2 टुकड़ा खा लिया तो इसको कैसे लिखें हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ये तो 4 टुकड़ा था तो इसको भी तो वैसे लिखेंगे 4 टोटल पार्ट्स उसके कितने पार्ट्स हो गए 2 पार्ट्स देखने में तो देखो दोनों सेम ही तो है बस फर्क किसका आ रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का
कहने को तो वही है, सेम वैल्यू ही तो है 2/4। अगर 2 से हम लोग काट दे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 ही तो आ जाएगा। सो दैट मीन्स 2 or more fractions having the same value of representing the same part of a whole are called as equivalent। इक्वी मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं इसे। ओके, तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? जैसे मान लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से 4/7 एक फ्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास लेट्स से 4/7 एक फ्रैक्शन। अब मुझे मान लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। okay? तो भाई 4/7 है, हम लोग अगर कर दें ऐसा 4/7 इंटू 2 कर दो, 4 2 जा 8/7 2 जा 40, ये भी इक्विवेलेंट होगा। 4/7 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि उसी के तो मल्टीपल्स ले रहे हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये भी इक्विवेलेंट है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे, वी कैन मेक लॉट मेनी। if I multiplied 4 with 4 4s are 16 by 7 4s are 28. So I can say 4/7, 8/14, 12/21, 16/28 and so on are equivalent fraction. क्यों? Because we can say 4/7 and 8/40, 8/40 both will give the same equivalent fraction as 4/7. Now other way to represent or to understand equivalent fraction, ये भी कर सकते हैं, that we can do the cross multiplication. Like if I take let's say 4/7 or 8/40, if somebody asks check whether they are equivalent fraction or not, है ना, कोई पूछ दिया कि भाई बताओ भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या, चेक कर लेंगे। क्या कर सकते हैं? वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल्सो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 4 या 4 इंटू 14 जो है 8 इंटू 7 के बराबर होना चाहिए, इट शुड कम इक्वल। सी 14 4 जा 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 5, 8 7 जा 56 आ रहा है इक्वल। So if we get the cross multiplication values being equal, then definitely that is equivalent fraction also. ये check भी कर सकते हैं। Okay, so this is about your equivalent fraction. तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, मजा आ रहा है, आया नहीं? So everything will be clear of your fractions or part wise part. Okay, I will be bringing the videos part wise so that you can understand very well about the concepts. Next comes simplest form of a fraction. Simplest form, अभी तक equivalent तो समझ में आ गया, है ना? अब what about your simplest form? So simplest form मतलब क्या होगा? A fraction is said to be simplest form or lowest term if the HCF of numerator and denominator is 1. अगर हमारा HCF जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम सॉरी 1 हो जाए, that's said to be as simplest form. जैसे हमने लिया कि 4/7 है लेट्स से, सो 4 and 7 ये किसी भी नंबर से नहीं कट सकता है एक्सेप्ट 1, सो दिस इज इन लोएस्ट टर्म। लेकिन इसी के बहुत सारे हमने बनाया, क्या बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, जैसे 12/21। अगर कोई कहेगा ये लोएस्ट टर्म में है, ये सिंपलेस्ट टर्म में नहीं है, व्हाई? बिकॉज 12 and 21 के HCF 1 नहीं आएंगे। यू कैन कट इट विथ योर द टेबल ऑफ 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21, तो HCF नहीं आया ना 1, so this is not in the lowest term. 4/7 is it lowest term. So to get converted any fraction to lowest term, we can just find the HCF and divide it. Okay, और अगर HCF
1 आता है, if the fraction is having the HCF as 1, if the numerator and the denominator is having the HCF as 1, then all right, that is already in the simplest form. Okay, chala, then let's start our practice. So this is all about our theoretical part, what we have covered. Now that's the time for our practice. So convert 2 1/3 into an improper fraction. जल्दी से बताओ what would be the answer on the chat box. जल्दी से फटाफट. So if your answer is, क्या होगा? 3 2s are 6. Okay, 3 multiplied by 2. As I said, the denominator gets multiplied with the whole number. 3 into 2, 6 plus 1. 3 into 2 plus 1 divided by 3. That is 7/3. This is your improper fraction. This is your improper fraction of it. Let's move on to the next question. Write a fraction equivalent to 4/9 and having a denominator 27. You have to write a fraction equivalent to 4/9 and that equal, as we all know, we can make multiple number of equivalent fractions, but तुम्हें ऐसा equivalent fraction बनाना है जिसका denominator 27 हो. जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर. क्या तुम्हारा दिमाग ऐसा चल रहा है? सर 9 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 3 27 होता है. सो इसको भी कर देते हैं ना, 4 3 12/27. यस 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 बच्चा लोग, everyone get this answer, then it's absolutely correct. बिल्कुल सही है. 4 3 12 and 9 3 27. Let's move on to another part. Now understanding comparing like fractions. Comparing unlike fractions. अब यहाँ कंपेयर करने की बात कर रहे हैं. कंपेयर मतलब एक बड़ा एक छोटा होगा. So how we will compare? So here we will be having 3 cases. एक होगा comparing like fractions. Now like fractions we all know the denominators are being same. Denominators क्या होता है? Same होता है. अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर पे. विल जस्ट लुक ऑन टू द न्यूमरेटर पार्ट. ओके, एंड विल कंपेयर विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉल. दूसरा, अनलाइक फ्रैक्शंस में 2 केस हो सकता है. एक जहां पे सेम न्यूमरेटर अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो न्यूमरेटर सेम हो सकता है डिफरेंट हो. ओके, सो वी विल लुक इनटू द 3 केसेस. ठीक है, चलो वन बाय वन समझते हैं. सो लाइक कंपैरिजन यहां देख रहे हैं. ओके, लाइक फ्रैक्शंस. So suppose let's say we have 3/10, 9/10, 11/10, 17/10, okay, 6/10, 29/10, 33/10. So when we have all the denominators being same, then उस केस में क्या होगा कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही छोटा हो जाएगा. फिर से मैं दोहराता हूं, लेट मी रिपीट. If we have like fractions, means the denominators are being same, then the numerator with the highest value, that becomes the bigger fraction compared to the all or the biggest fraction. So here if we write in the ascending order or if we write in the descending order, ascending मतलब छोटा से बड़ा, descending means बड़े से छोटा. So let's say if I write in a, let's say, ascending order,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट 3/10, सबसे छोटा है। फिर क्या आ जाएगा 3 के बाद 6/10, then 9/10, then 11/10, then 17/10, then 29/10, and the highest one would be 33/10. So if we have a like fraction, very easy to determine just by looking into the numerator part. Whatever the numerator is, the greatest one, that becomes the greatest fraction there. ओके चलो फिर दूसरा आते हैं हम लोग अनलाइक में। अनलाइक फ्रैक्शन, सपोज यहां पे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल अनलाइक विथ न्यूमरेटर सेम, ऐसा केस लेते हैं, न्यूमरेटर सेम रखते हैं, ठीक है। चलो तो लेट्स से 4/3, ठीक है, 7/3, 19/3, सॉरी 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 बाय मिस्टेक, सॉरी मैंने उल्टा ही लिख दिया, न्यूमरेटर सेम और न्यूमरेटर अलग ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ क्या मैं बोल रहा था, न्यूमरेटर हमें सेम लेना है, ठीक है बच्चों। तो 7/3 मान लेते हैं, ठीक है, 7/8, 7/10, 7/5 ले लेते हैं, 7/1 ले लेते हैं, 7/11 ले लेते हैं। अब क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हमारा न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम। हर में हम लोग क्या देख रहे हैं 7 7 7 7 7 7 सब में। इस केस में क्या करें, इस केस में क्या करें, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर। सो यहां पे हमारा ध्यान देना होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है। विल लुक इनटू द डिनोमिनेटर पार्ट। सो इन द डिनोमिनेटर पार्ट we find 3 8 10 5 1 11। in this case अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है, if we have the numerator being sorry if the denominator is a smaller, okay, if the denominator is a smaller, that number is going to be more bigger, वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। so if I write in the ascending order, ascending order मतलब छोटा से बड़ा, तो मैंने कहा कि भाई अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर सारे के सारे सेम है, इफ द न्यूमरेटर्स आर बीइंग सेम, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, सो विल लुक इनटू द डिनोमिनेटर पार्ट, और जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमें दिखे वही सबसे छोटा हो जाएगा, दैट विल बिकम द स्मॉलेस्ट वन। तो बताओ डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है, राइट ऑन द चैट बॉक्स। यस बिल्कुल करेक्ट, 7/11, 11 सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा 7/10, उससे थोड़ा छोटा 7/8, 7/, फिर 5, 7/3 एंड लास्टली 7/1। तो 7/1, 1 चूंकि सबसे छोटा नंबर है और न्यूमरेटर्स सेम थे, so that becomes the largest here. Among these, it becomes the largest or the biggest number. If we are writing in a ascending order, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाइक फ्रैक्शन अगर होता है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, विल लुक इनटू द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा हो वही बड़ा होगा। अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स हमारे सेम हो तो डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, दिमाग में चल रहा होगा सर जरूरी थोड़ी ना कि न्यूमरेटर सेम ही होगा,
Is it important? Is it necessary that every time the numerators will be same? No. So unlike fractions में एक और केस हो सकता है, एक केस और हो सकता है, न्यूमरेटर डिफरेंट. अब क्या करें? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/3, 1/2 एंड 1 by सपोज 7. ठीक है, 1/3, 1/2, 1/7. इसमें हम लोग इसको न्यूमरेटर क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट. तो क्या करूं इसमें? 4/3 बना दूं, इसको 7/2 बना देते हैं. ठीक है, चलो तो अब तो डिफरेंट हो गया. 4/3, 7/2, 1/7 डिफरेंट हो गया सारे. अब क्या करें? अब क्या करें? सो व्हाट विल डू इज, अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि विल टेक द एलसीएम ऑफ इट. ठीक है, तो एलसीएम लेके सेम डिनोमिनेटर तो बना सकते हैं, ऐसे कंपेयर करना डिफिकल्ट है. सो व्हाट विल टेक इज 3, 2, 7. ये तीनों का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 2 6, 6 7 42. तो 4/3 को अगर हम लोग को 42 बनाना है डिनोमिनेटर में, सो कितना से मल्टीप्लाई करें? 14 से. सो 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 56. इसी तरह से 7/2 है, कितना मल्टीप्लाई करें? 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 21 से. ऊपर भी 21 से करना होगा. 7 1 7, 7 2 14. उसी तरह से 1/7 है, इसको भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितना, ताकि 42 आ जाए. 7 6 सो 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6. अब हम लोग देखो भाई क्या है, बहुत ही सिंपल है. डिनोमिनेटर सेम हो गया, 42 सब जगह 42 है. अब डिनोमिनेटर सेम, तो बताओ कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है. ऑब्वियस, सबसे बड़ा कौन है? 147/42 है ना. तो अगर हम लोग उसको असेंडिंग में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आएगा 6/42 पहले, फिर आएगा 56/42 एंड देन 147/42. तो दैट गिव्स व्हाट? 1/7, then 4/3 and ultimately 7/2. So this is how we can convert and compare between the fractions. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या इसको अगर कन्वर्ट करेंगे पहले, अगर हमारा न्यूमरेटर्स डिफरेंट है तो कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल कंपेयर. लाइक है तो कंपेयर कर लेंगे आराम से, जो बड़ा हो न्यूमरेटर वही हो गया. अगर अनलाइक में न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखेंगे, तो जो सबसे छोटा हो जाएगा वही सबसे बड़ा. ऑलराइट, चलो. सो सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. जल्दी से बताओ मुझे, सॉल्व करो और जल्दी से बताओ. अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी नाम दे दूं और डी नाम दे दूं, तो तुम बताओ ऑन द चैट बॉक्स में बताओ क्या सीक्वेंस आ रहा है तुम्हारा. पहले कौन आएगा? ए पहले, बी आएगा, सी आएगा, डी. उसके हिसाब से तुम जल्दी से अरेंज करके मुझे बताओ, जल्दी से फटाफट. चलो स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट. ऑलराइट, चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट व्हाट काइंड ऑफ इट इज. हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर्स भी अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग है. व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस. उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 5, 6, 3 एंड 20. तो बताओ जरा क्या आएगा एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं 5, 6, 3 और 20 का. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 ले सकते हैं, 5 एज इट इज, 3 2 6, 1 हो गया, 20 हो गया. देन वी कैन टेक 2, 5 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा. देन 5 ले लेंगे,
5 हो गया, 1 1 2 जा, सो एलसीएम कितना आया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 2 जा 60, तो एलसीएम हम लोग को बन के आ रहा है 60। सो अब हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, 4/5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर 60 बन जाए। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 12। ओके, कैसे पता चलेगा, 60 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 इंटू 12 आएगा 60, 4 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 48। ओके, उसी तरह से 5/6, 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई करे, 60 आएगा, 6 10 5 10 कितना आ जाएगा, 50। सिमिलरली इट गोज विथ 2/3 ऑल्सो, कितना मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, 3 इंटू 20, सो 22 कितना हो जाएगा, 40। एंड लास्ट 11/20 को क्या मल्टीप्लाई करे तो 60 आएगा, 20 इंटू 3, ऊपर भी 3 कर देंगे, 11 3 33। अब हमारे पास नंबर आ गए क्या, 48/60, 50/60, 40/60 एंड 33/60। अब ये तो लाइक टर्म्स है, नाउ वी कैन अरेंज देम, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी हैव अ लाइक टर्म्स अगर आ जाते हैं, सो जो बड़ा हो गया वही बड़ा, राइट। तो हमारे पास 48 है, 50 है, 40 है और 33 है। सो अगर असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो क्या आएगा, पहले 33/60, फिर क्या आएगा 40/60, देन 48/60 एंड देन 50/60। तो अल्टीमेटली 33/60 कौन सा फ्रैक्शन है, 11/20, देखो। देन 40/60 is your 2/3, next 48/60 4/5, and last 50/60 that is 5/6। so this is our correct answer, ऐसे हमें करना है। so if you have understood it, so जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो पक्का पक्का, अगर तुम्हारा आंसर आया पक्का पक्का, है ना। and I will acknowledge these students who is going to get the maximum comments and with the right answers। चलो आगे बढ़ते हैं। so let's start with some quizzes now, है ना। तो बेसब्री से इंतजार होता है सबको का क्विज का, तो जल्दी से फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कर डालो। so पहला सवाल, which option gives an equivalent fraction of 13/25? बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है 13/25 का, जल्दी से जल्दी से। क्या वो 65/50 है, 26/75 है, 156/300 है, या 103/205? याद करो क्या बताया था मैंने, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे सो दैट वी गेट दीज नंबर्स, या दूसरे तरीका से मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं। 13/25 इज इक्वल टू 60/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या वो अगर इक्वल आ रहा है दैट मींस ओके, अगर नहीं आ रहा है इट इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, लेट्स लुक इनटू द आंसर। सो इफ योर आंसर इज 156/300, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक 13/25 इंटू हम लोग क्या करें कि यहाँ पे हमारा 50 आना चाहिए एज पर द ऑप्शन ए, तो 25 2 सा 50 होता है 13 2 सा 26 होना चाहिए, बट है कितना एक्सक्यूज मी 65/50, सो ये तो सिमिलरली 26 ऊपर है 75 नीचे, नहीं चलेगा क्योंकि 26/50 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं 13/25, 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 300 आएगा। सो कैसे नहीं पता चल रहा है, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं रफ में, 25 1 जा 25, कितना बचा 5 0 उतरा, 25 2 जा मतलब 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे,
सो 13 इंटू 12 करते हैं तो 12 3 जा 36, 3 12 प्लस 3 15। अरे वाह, यही तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, ही सही आंसर है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 5/18? फ्रैक्शन फॉर्म ये डेसिमल में दे रखा है, 5/18, याद रखना 5/18 फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा इसका? बहुत जल्दी होना चाहिए आंसर। चलो स्टार्टिंग द क्विज इन 5 4 3, 5 सेकेंड है तुम्हारे लिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो कौन सा आंसर तुम्हें लगता है। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। क्या आंसर तुम्हारा 5/18 है? एब्सोल्युटली करेक्ट है फिर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ठीक है। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 हैविंग डिनोमिनेटर 18। ऐसा कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 18 है? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एज अ होमवर्क। ओके, ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल, बाय बाय, सी यू सून।